to everyone. So now we have chapter 3, meeting life challenges to complete. The glance through this chapter is that stress. Stress is a process that occurs in response to situation or event, stressors that disrupt our physical and psychological function. इसका क्या मतलब है कि जो स्ट्रेस है वो एक तरीके का रिस्पॉन्स है, एक तरीके का कोपिंग मैकेनिज्म है। जब भी हम किसी ऐसे इवेंट में आते हैं, ऐसे सिचुएशन में आते हैं जिसे हम स्ट्रेसर का नाम देते हैं कि अच्छा ये वाली जो इवेंट है ये हमारे लिए बहुत स्ट्रेसफुल है और इस इवेंट की वजह से हमें स्ट्रेस हो रहा है, हमें टेंशन हो रही है, हमारी बॉडी पे भी फिजिकल इशू हो रहा है, हमें मेंटल स्ट्रेन हो रहा है, उसी को स्ट्रेस कहते हैं। Now, the general adaptation syndrome, first reported by Hansen, describes how our bodies to react into the effect of stress, including 3 distinct stages: alarm, resistance, and exhaustion. जो गैस मॉडल है ना, उस गैस मॉडल में हमें बताया है कि हमारी बॉडी जो है वो 3 डिफरेंट स्टेजेस में वर्क करती है जब हम स्ट्रेस में होते हैं: अलार्म, रेजिस्टेंस और एग्जॉस्शन। अलार्म मतलब किसी भी सिचुएशन को लेकर हम अलार्म हो जाए। अलार्म क्या करता है? उठाने का काम करता है। So we were drowsy and drowsy. We are working like a sloth for something. और हमें उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा तो हम अलार्म हो जाएंगे कि ओके मुझे इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा बिकॉज आई एम वर्किंग लाइक अ लेजी पर्सन। तो अब मैं उसके लिए काम करना शुरू करूँगा। रेजिस्टेंस मतलब कि हम किसी भी चीज़ को लेकर ना किसी भी चीज़ को रेजिस्ट करें। जैसे कि अगर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है हमारा तो हम उस रिजल्ट को रेजिस्ट करें कि अच्छा ये नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, वी हैव टू वर्क फॉर इट। एंड एग्जॉस्शन मतलब इतना काम कर ले कि आप एग्जॉस्ट हो जाए। नेक्स्ट इज stressor. Stressors can be major life events such as death of spouse or daily hassles of everyday life, such as receiving a minor traffic ticket or having to wait in a line for a grocery store. So these all are stresses. ऐसी situations जो आपको stress में डाल देते हैं। Sources of work related to stress including workload, underload, role conflict, performance appraisal. These all are things जो भी वर्क का जो सोर्स है ना वहाँ से स्ट्रेस अगर ऑब्टेन हो रहा है तो दैट इज बिकॉज ऑफ हाई वर्क ओवरलोड, अंडरलोड, कमी बहुत कम काम है आपके पास, रोल कॉन्फ्लिक्ट कि आपका रोल इतना सेटिस्फाइंग नहीं है, परफॉर्मेंस अप्रेजल आपको परफॉर्मेंस को लेकर प्रॉब्लम है। So this was what sources of work that associated with stress. Then prolonged exposure to high level of stress may lead to illness. That means अगर आपका लेवल बहुत हाई है स्ट्रेस में तो आपको बॉडी की सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स शो होने लगते हैं और फिर वो आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ, फिजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ दोनों को खराब करेगा। Then come nature, type and sources of stress. Nature of stress. Stress is described as a pattern of response an organism makes to stimuli, even that disrupts the equilibrium and exceeds a person's ability to cope. Stress को कैसे describe किया गया है? वो pattern है, pattern of responses. जैसे मैंने बोला ना कि आपके पास स्ट्रेसिंग सिचुएशंस आती हैं जिन्हें हम स्ट्रेसर्स कहते हैं और दैट इज ओनली द कॉज ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस भी एक पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेज है जो हम इवेंट्स को लेकर देते हैं इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक्स टू स्टिमुलस इवेंट। मतलब जो आपका जो स्ट्रेस है ना वो आपकी स्ट्रेसर्स ही स्टिमुलेट करते हैं और जो आपका इक्विलिब्रियम है आपकी बॉडी का, फिजिकली, आपकी साइकोलॉजिकली जो इक्विलिब्रियम है, जो बैलेंस बना होता है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं एंड एक्सीड्स पर्सन्स एबिलिटी टू कोप। जब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है ना
तो सिचुएशन के बाद ऐसा होता है कि आपको सिचुएशंस जो आप फेस कर चुके हो तो स्ट्रेस होना बंद हो जाता है। जैसे एग्जाम्स, अगर आप बहुत ज़्यादा टेस्ट लगा के गए हो, जस्ट लाइक यू फील आप एग्जाम दे रहे हो, तो जब आप एग्जाम दोगे ना तो आपको एग्जाम का स्ट्रेस नहीं होगा, यू विल नॉट फील दैट स्ट्रेसफुल। लेकिन अगर आप नहीं देखे गए हो कोई टेस्ट, कोई आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी, देन यू विल फील स्ट्रेस। नेक्स्ट कम टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। दो टाइप के स्ट्रेस होते हैं, यू स्ट्रेस और डी स्ट्रेस। यू स्ट्रेस को गुड स्ट्रेस बोलते हैं, डी स्ट्रेस को बैड स्ट्रेस बोलते हैं। यू स्ट्रेस इज अ लेवल ऑफ स्ट्रेस दैट इज गुड फॉर यू and is one of the person's best asset for achieving peak performance as a manager minor crisis. You stress होना चाहिए, हल्की सी anxiety, हल्का सा nervousness, so that you can do your work very good. ठीक है, होता भी है. All of us are little stressed when we are in exam. हमें performance pressure होता है कि अगर हम नहीं perform कर पाएंगे तो we'll disappoint everyone around us. दैट इज वाई हमारे यूस्ट्रेस काम करता है, और वो यूस्ट्रेस जो होता है ना वो फिर उसी लेवल में वर्क करता है, और फिर हम उसका यूज करते हैं, उसका यूज करकर अपने परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव कर लेते हैं। De-stress is a later manifestation of stress that causes our body wear and tear. De-stress is bad stress. होगा, you will face panic attack, anxiety attack, physical problems, physical thinking, जितने भी stressful situations हैं, जैसे नींद ना आना, hypertension, सर में दर्द होना, migraine, all these things are associated with de-stress. Then comes strain. Strain is a reaction to external stress, and generally we feel mental strain, performance pressure. All these things are similar to stress. Now, Heinzsey, the father of modern stress research, defines stress as a non-specific reason in response to any demand. Stress को कैसे define किया है Heinzsey? Heinzsey is the father of modern stress research. उन्होंने stress को define किया non-specific response to any demand. Non-specific response मतलब कुछ तो हो रहा है आपके सराउंडिंग में, कोई तो स्ट्रेसिंग सिचुएशन है पर आपको नहीं पता हाउ यू विल डील विद दिस सिचुएशन. ओके, नाउ दैट इज regardless of the cause of the threat, the individual will respond with same psychological patterns of reaction. So इसमें क्या होता है ना कि जो इंडिविजुअल होता है ना वो सेम पैटर्न ऑफ रिएक्शन ऑफ साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल रिएक्शन ही वही रिस्पॉन्ड करता है. जैसे पैनिक अटैक्स के बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, कुछ भी ऐसा हुआ, कुछ भी स्ट्रेसिंग हुआ, पीपल विल गो इनटू पैनिक अटैक. अब वो पैनिक अटैक उसको तब भी आएगा जब उसको एग्जाम्पल स्ट्रेस होगा, तब भी आएगा जब उसको सेपरेशन एंजाइटी होगी. एवरी टाइम वो ओनली सफर विद पैनिक अटैक. तो मतलब सिचुएशंस अलग अलग है, डिमांड्स अलग अलग है, आपका कोपिंग मैकेनिज्म भी अलग अलग होना चाहिए. आप स्ट्रेस की वजह से एक ही तरीके से रिस्पॉन्ड कर लें. नेक्स्ट कम साइकोलॉजिकल मीनिंग ऑफ स्ट्रेस. नाउ पॉज. एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रेस. Internal state, biological and psychological reaction leading to stress experiences. Result, stress reaction. Challenge to overcome and illness, stress. Cognitive theory of stress. An individual's response to a stressful situation largely depends on the perceived event and how they are interrupted or appraised. Lawrence has distinguished between two types of appraisal, primary appraisal and secondary appraisal. Now, appraisal is a situation where you feel what you feel about anything. कोई भी stressing event है, आप उसके बारे में कुछ सोच रहे हो. तो जो stressful situation है, वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आपका interpretation या appraisal कैसा है उसका. Primary appraisal. Primary appraisal is suppose a non-stop heavy rain suddenly pours at your place. You might think that the heavy rain is not important since you don't have any
want some wet rain. Or you might say that heavy rain is good because now you don't have to wake up early and go to school since classes are suspended. Or you might see the heavy rain as stressful because you have a schedule you have a schedule a group outing with your friends. Now, after answering these two questions, the second part of the primary cognitive appraisal is to classify whether the stressors or the situation is a threat or a challenge or a harmless. So when you see the stressors as threat, you view it as something that will cause harm to you in future, such as an exam for getting fired, such as failing an exam or getting fired from job. Now when you look at it as challenge, you will develop a positive stress response because you expect the stressor to lead you to higher class ranking or better employment. On the other hand, seeing the stressor as harmless means the damage has already been experienced, such as when person underwent a recent leg amputation or encountered a car accident. तो ये होगी प्राइमरी appraisal. इसमें हम तीन तरीके की चीजें फील करोगे, थ्रेट, चैलेंज और हार्मलेस. थ्रेट में क्या होगा कि अगर आपको कोई सिचुएशन आएगी तो आप उस सिचुएशन को सिचुएशन थ्रेट जो आपको फ्यूचर में हार्म करेगी इस तरीके से व्यू करो. चैलेंज में आप उसको एक कंपटीशन एक ऐसी चीज़ों से व्यू करो कि हाँ यू विल गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज नाउ इफ यू वर्क हार्ड इन दिस. नेक्स्ट, हार्मलेस में मतलब आपके साथ जो बुरा था वो द डैमेज इज ऑलरेडी डन. Now comes secondary appraisal. Secondary appraisal involves those feelings relating to dealing with stressors or the stress it produces, uttering statements like, I can do it if I do my best. And if this way I feel, I can always try another method. Indicates positive secondary appraisal. In contrast to this, statement like, I can do it, I know I will fail, I will do it because no one believes I can. I will not do it because no one believes I can. I won't try it because my chances are low. Indicate negative secondary appraisal. Although primary and secondary appraisal are often the result of an encounter within stressor or stress, doesn't always happen with cognitive appraisal. Now, signs and symptoms of stress. Responses to stress varies depending upon personality of an individual. Every person has his own pattern of dealing with stress. Warning signs of stress vary from individual to individual depending upon intensity. Physical symptoms of stress can be palpitation, sweating, emotion system can be confusion, or irritability, which are manifested in behavioral symptoms such as withdrawal or restlessness. If any of these symptoms are left unresolved, they may lead to suicide, burnout, psychological disorder, or a medical disease. Symptoms of stress: memory loss, dizziness, pain, chest, loss of interest in daily activities, grinding teeth, headache, irritation. Headache में आप migraine भी लगा लीजिए because many times it happens that people suffer from migraine as well. Then warning signs of stress is physical signs, mental signs, emotional and behavioral signs. Now types of stresses. Psychological stress. Psychological and environmental stress. Social stress.
Physical and environmental stress. Physical stress are caused when we physical and environmental stress. Physical stresses are caused when we overexert ourselves physically, lack of nutritious diet, suffer an injury, fail to get enough sleep. If these are called physical stresses, physical stresses मतलब physical situations को लेकर आपको कोई भी stress हो रहा है, physically आप harm हो गए हो, आपका nutrition अच्छा नहीं है, या आप किसी injury से suffer कर रहे हो या नहीं. The environmental stresses are caused by air pollution, crowding, noise, heat of summer, winter goods, and disasters such as fire and natural disasters such as earthquake, floods, droughts, landslides, volcanic eruptions. तो जितने भी environmental calamities होती है उसकी वजह से human stresses होते हैं. That comes under environmental stress. Now psychological stress. Frustration. आपको किसी भी चीज़ को लेकर frustration हो रहा है. You are not suiting with that particular thing. Conflict. किसी से आपको conflict हो गया. Internal pressure, social pressure. खुद आप अपने ऊपर pressure बना रहे हो या society आपके ऊपर pressure बना रही है. ये सारी चीज़ें आपको mental stress की तरफ धकेलती हैं and that is why they are known as psychological stress. Next comes social stress. These result from an interaction with other people, such as death or illness in the family, strained relationship, trouble with neighbor, etc. For example, attending a party will be stressful for a person who is introvert and staying at a home for a person who is a partner. You know? So, yeah, this is how it is that in social stresses, क्या होता है ना आपकी इंटरेक्शन ऑफ पीपल बताती है. जैसे आई एम एन इंट्रोवर्ट तो मुझे दूसरों से इंटरेक्ट करना उतना पसंद नहीं. आई विल बी हैप्पी अगर मैं घर पर हूँ. ऑन द अदर हैंड आप किसी एक्सट्रोवर्ट को घर पर उठा के देखिए, दैट ही विल गो मैड बिकॉज ही इज नॉट एबल टू इंटरेक्ट विद अदर्स. नाउ कम सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस. The various sources of life events, hustle, traumatic events. Life events में it changes due to life events such as moving into a new house. बहुत सारे लोगों को stress होता है because they have to move from one place to another. अपना सारा सामान move करके लेके जाना होता है. You don't have a fixed place to live. That is a stressful condition. आपकी long term relationship भी आपको stress दे सकती है. Parents stress दे सकते हैं. ठीक है, पीरियड स्ट्रेस दे सकते हैं. Hazards may happening in a daily life such as noisy surroundings, computing, quarrels and neighbor can cause stress. Daily life में जो चीज़ें होती रहती हैं, जैसे आज सरप्राइज टेस्ट हो गया, कल टेस्ट के मार्क्स बता दिए, noisy surrounding, कम्युनिटी बहुत ज़्यादा ही शोर हो रहा है. Quarrels and चीज़ें हो रही हैं उसके साथ. Then traumatic events, train accident, fire लगे, road accident, robbery, earthquake, persistent symptom of anxiety. Post-traumatic anxiety disorders भी होते हैं, PTSD, stress disorders. वो भी इसलिए होती है क्योंकि flashback और intrusive thoughts की वजह से हमें traumatic events की बार-बार याद आता है. Now comes stresses type. Now comes a flow chart. Types: environmental, psychological and social stresses. Dimensions: intensity, duration, complexity, predictability. Intensity मतलब कितनी उसकी intensity है, कितना intense हो गई है वो चीज़, कितना deep में चला गया. Stress duration मतलब कितना stressful duration है आपका. कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कितनी कॉम्प्लेक्स है, अच्छे से सॉल्व हो पाएगी, ये बहुत टाइम लगेगा सॉल्व करने के लिए. प्रिडिक्टेबिलिटी मतलब आप कितना प्रिडिक्ट कर सकते हो स्ट्रेस के आउटकम्स. रिसोर्सेज फिजिकल, पर्सनल एंड सोशल. आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं डील करने के लिए? मनी, मेडिकल केयर, पर्सनल केयर, स्किल, कुकिंग स्टाइल्स, सोशल केयर, सपोर्ट नेटवर्क एंड प्रोफेशनल हेल्प. पर्सन कैरेक्टरिस्टिक. Psychological मतलब physical, psychological मतलब mental, physiological मतलब physical,
cultural matlab social. Then comes stress appraisal. Stress appraisal is how you interpret stress. Physiological response, how your physical body responds. Behavioral response, how the pattern of behavior, pattern of your personality responds. Emotional response, how you emotionally are capable enough to respond to particular thing. Cognitive response, response refers to how your mental capabilities work when you are in stress. Next is effect of stress on psychological functioning and health. Body, headaches, frequent infection, taut muscles, muscular twitches, fatigue, skin irritation, breathlessness, mind worrying, muddled thinking, impaired judgment, nightmare, indecisions, negativity in hasty decisions, emotions, loss of confidence, more fussy, irritability, depression, apathy, alienation, apprehension, behavior, accident prone, loss of appetite, loss of ancestry, driving mode, insomnia, restlessness, and smoking mode. Then come emotional effects. Those suffering from stress experiences mood swings, show decreasing confidence, suffer from feeling of anxiety, depression, and increased physical and psychological tension. This can cause stress, mood suffer hota, mood swings, show decreasing confidence, suffer from feeling of anxiety, depression, and increased physical and psychological tension. These are neurotic symptoms, psychosis symptoms. These comes under the concern of personality where your mental health is decreased and depleted to an extent that you need to take a medical care. Next is psychological effect. Under stress, there is an increased production of hormones such as adrenaline and cortisol. Adrenaline is a uh, fight and fight hormone. It is like flight and fight hormone. Sorry. Now, and cortisol is increasing your body stress level in a sense because sometimes it is required your body should be in stress. So that is because your body needs eustress, and that is why your body is having a hormone named cortisol. So जब भी हमें stress होता है तो cortisol का level ना increase होता है. So these are it's a physiological symptoms. कि आपकी बॉडी फिजिकली इंटरनली एंड आपकी आउटर बॉडी पे कुछ सिम्टम्स रहेंगे. Change in the release of phenephrine and non-phenephrine, showing the digestive symptom, expansion of air passages, lungs, constrictions. Generally, you have noticed that in a stress, in a very stress, you face constipation, and that is because stress can reduce your internal bodily activity, that can hamper your internal bodily activities, and that is why you face constipation and other issues. Now comes cognitive stress. Cognitive effects of stress are poor concentration and reduced short-term memory capacity, and behavioral आपकी जो concentration है, आपकी जो memory power है, आपकी जो interpretation, perceiving and understanding power है, वो reduce हो जाएगी. Behavioral effect में these includes disrupted sleep patterns, increased absentees and reduced work performance. स्लीप पैटर्न्स को डिस्टर्ब करेंगे, वर्क परफॉर्मेंस को डिस्टर्ब करेंगे और आपकी पूरी प्रोडक्टिविटी को डिस्टर्ब करना चाहेंगे. नेक्स्ट कम्स जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम. जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम इज गैस मॉडल. गैस मॉडल में क्या होता है, सबसे पहले जब कोई स्ट्रेसिंग सिचुएशन आती है तो अलार्म रिएक्शन देते हैं. Alarm reaction is the presence of stresses lead to the activation of adrenal pituitary cortex system. This triggers the release of the hormones producing the stress response, and now the individual is ready to either flight or fight. इस वाले अलार्म रिस्पॉन्स में या तो आप फाइट करते हो विद द सिचुएशन, या तो आप फ्लाइट कर जाते हो, या तो भाग जाते हो सिचुएशन से. Then resistance stage. Under the prolonged stage, the parasympathetic nervous system calls for more cautious
use of body resources in which organisms makes efforts to cope with a threat. रेजिस्टेंस स्टेज में क्या होता है, आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है दैट triggers your body to deal with the situation, to cope with the situation, to cope with the threat. Then comes exhaustion stage. Continued exposure to the same stressor and additional stressors drain the body and its resources and lead to the third stage of exhaustion. The psychological system involved in alarm reaction resistance became ineffective and susceptible to stress related to disease increase. So now that comes to the stage of exhaustion where now bodily resources, mental resources, everything dried up because of, so this is what the exhaustion state did. Now stress and immune system. Release of stress hormone results in weakening of an immune, thus affecting mental and physical health. Weakened immune system has a serious effect on the individual's health. Stress can affect. So, you know what? Stress, just I told you earlier as well, कि stress आपकी bodily internal activities को affect करता है. Digestive system कमज़ोर हो जाता है, या respiratory system कमज़ोर हो जाता है, heart बहुत ज़्यादा hypertension की state में चला जाता है. सिमिलरली आपका जो इम्यून सिस्टम है ना उसको भी स्ट्रेस वीक कर देता है बिकॉज इन स्ट्रेस यू आर नॉट एबल टू थिंक अबाउट सर्टेन थिंग्स लाइक आपकी फिजिकल बॉडी को किसी भी पैथोजन से डील भी करना है. आपके बॉडी इज प्री ऑक्यूपाइड विथ ऑल द थिंग्स, तो बाकी सारी चीज़ें ऑलरेडी वीक हो जाती है. तो वीकेंड इम्यून सिस्टम हैज सीरियस इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल्स हेल्थ. Stress can affect the natural killer cytotoxicity, which is the major importance of defense against various infections and cancer. तो natural killer जो cytotoxicity है उसको भी stress मार देता है. Reduced levels of natural killer cell cytotoxicity have been found in people who are highly stressed, including students facing important examination, bereaved person, and those who are severely depressed. Individuals may have panic attack or show obsessive behavior, mood swings, or phobia. These individuals have feelings of hopelessness, which is worsened by injury or disease. Next comes what stress does to our body. Head issues with what stress does to your body. Head issue with anger, depression, irritability, sadness, lack of energy, swings in appetite, concentration problems, sleeping problems, headache, mental health issues, anxiety, panic disorder, skin problems like acne, pimples and all, joint and muscles, aches and pains, tension, lowered bone density, heart, increased blood pressure, increased heartbeat, high cortisol, and instances of heart attack, stomach cramps and reflux, nausea, constipations, pancreas, diabetes, intestine digestive issues like irritable bowel syndromes, diarrhea and constipation, reproductive system, reduced sex drive, low sperm production and increased periods, immune system, reduced ability to battle and recover from illness. Then comes coping with stress. Three coping strategies given by Adler and Parker are task-oriented strategy. This involves using alternative courses of action for coping, for example, scheduling your time better or using better methods to solve problems. Emotional-oriented strategy. This involves venting feeling of anger, frustration, or deciding that nothing can be done and change things, for example, to stop worrying. Avoidance oriented strategy. This involves denying and minimizing the seriousness of the situation. It involves conscious suppression of stressful thoughts and their replacement by the self and protective thoughts. Example of this are watching TV, phone, and a friend are trying to be with other people.
Next come stress management. Stress management consists of family and friends are good sources, exercise, sleep, relaxation technique, set realistic goals, reframe your thoughts, set priorities, food and diet, take control, avoid extremes, figure out what's important, change how you see the situation. Then techniques you can help relaxation techniques like meditation, biofeedback like आपनी biology आपने body को regularly checkup करा सकते हैं. Cognitive behavioral techniques, some study techniques, some new Parkinson technique is also very nice technique in this. Meditation produces procedures, creative visualization and exercise. Then come life skill with the help of meeting in the changes of school life. Assertiveness, time management, rational thinking and self-care. Assertiveness is a positive behavior. टाइम मैनेजमेंट है आप कैसे अपने प्रेशर को कैसे अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है. रैशनल थिंकिंग मतलब आप हमें इमोशंस में नहीं अपने रैशनल माइंड में कॉग्निटिव माइंड से सोच रहे हो कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट और व्हाट इज नॉट. अपने बिलीव्स को साइड में रख दिया, अपने ड्राइविंग को साइड में रख दिया, अपने इंट्रूसिव थॉट्स को साइड में रख दिया. ओनली थिंग इज फैक्ट. सेल्फ केयर मतलब आप अपने को कैसे हेल्दी रखते हैं. देयर इज आल्सो वन थिंग कि आप कितना डिसिप्लिन हो. डिसिप्लिन होना भी इज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ केयर. आप अपना हेल्थ का कितना ध्यान रख रहे हो, मेंटल हेल्थ का कितना ध्यान रख रहे हो, अपनी साइकोलॉजिकली कितने फिट हो. these all come under self care. And with this we come to the end of this chapter. Thank you so much.